कैट सिर्फ़ 6 महीने दूर है और हम लोग को बहुत एंग्ज़ायटी होती है कि यार सिर्फ़ 6 महीने बाकी है। क्या मैं अभी शुरू करूँगा तो मैं निकाल पाऊँगा कैट? या अगर मैंने शुरू कर दिया, मैं जनवरी से प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट क्या मैं सही प्रिपेयर कर रहा हूँ? बहुत लोग के साथ ऐसा होता है कि इवन मॉक में अगर कम मार्क्स आ जाए, बिकॉज़ बहुत लोग मॉक्स लेने लग गए, दे फील लाइक ओके, आई हैव नॉट डन इट राइट, एंड आई थिंक दैट इज़ एग्ज़ैक्टली वेयर यू आर मूविंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। I am an example who has prepared for 4.5 months in my last attempt and took out CAT. I got 97.84. Yes, I will agree to the fact कि मेरा पहला 2 साल से फाउंडेशन था, बट आई विल ऑल्सो लाइक यू गेस कि अगर मैंने दिसंबर में पिछले साल प्रेप छोड़ दी एंड देन आफ्टर IIFT interview and waiting for those who know my story, I picked up my books again in the late July. एंड देन आई डिड इट। सो देयर मस्ट बी सम डिस्कनेक्ट राइट? मेरे को सब याद नहीं होगा, काफ़ी कुछ याद भी होगा, आई एग्री। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट पीपल who are starting now or who are anxious, and I give you a roadmap, a 6 months roadmap, which will be no BS roadmap on how you can structure your preparation in a way that you crack CAT. Before moving forward, a special announcement, मैंने अपना खुद का पर्सनल कैट कोचिंग मेंटरिंग कोर्स चालू किया है, which is for 6 months of duration. I'll take it in batches if people like join in July, but you can just text me on Telegram and we can have a 10-minute conversation and see if it fits your bill or not. It is mostly for people who are not very confident about the way they are preparing. Remember, information is everywhere. People pay for clarity. So if you think I can be of you, please get in touch with me. One case study, मेरी एक स्टूडेंट जिसने मुझे जून में ज्वाइन किया था पिछले बार, आई स्टार्टेड just to test out if I'm the pet for it. I took 300 per month from her, and she had 40 ka score in mocks when she started, and we followed everything. I had set up the process, she followed it, we were having regular checkup, and by the end of CAT, she got more than 113 marks, and she is going to IIM Calcutta. She was also in my GDPI course, so I'm happy for her. So if you want to be the next one, probably we will do it together. And let's continue with the video. So यार देखो, जब भी आपको किसी चीज़ के बारे में प्रिपेयर करना होता है एंड इट इज़ कमिंग विद अ डेडलाइन, so how many days you will have is the first thing that you should measure. And right now we have a total of around 170 days. ठीक है? So there's जून में 25 days मान लो, and फिर जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो एंड द गुड थिंग इज इस बार क्या एकदम नवंबर के एंड में हो रहा है। तो हमारा प्रिपरेशन 3 वेज़ में स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? फर्स्ट इज़ टू गेट द बेसिक्स डन, एंड दिस इज़ फॉर पीपल हू आर बिगिनिंग राइट नाउ। आपको बेसिक्स डन करना है जून, जुलाई एंड अगस्त में। सेकंड फेज़ इज़ टेस्टिंग आउट द स्ट्रैटेजी एंड प्रैक्टिसिंग। So August, September is mostly for practicing, for getting onto your weak areas, revising and making sure that you are covering all the weak links possible. And the third phase, which is October and November, is rigorous test taking, revising again, rigorous revision, and then obviously covering the weak links but not studying anything new. Okay? Now there are 4 things you need to do to achieve this. First, be accountable to yourself and have a plan. Second, use limited resources. So I have talked about it previously as well कि लोग हर जगह रिसोर्सेज खोजते हैं, यार ये दे दो, वो दे दो, एंड पीपल गेट लॉस्ट इन दैट। प्लीज डोंट हंट फॉर रिसोर्सेज, ठीक है? टेक समथिंग, किसी भी एक कोचिंग का बुक उठा लो, कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, यूट्यूब में अगर देख लो, कोई एक चैनल पकड़ो, उसको देखो, उसको समझो, एंड देन गेट इट डन एंड टू एंड। डोंट रन बिहाइंड a lot of things. Third is mocks. Practicing timely mocks is very, very much possible. So if you are not practicing mocks, it's like you're going in a war और आपको तलवारबाजी करनी है, बट आप तलवारबाजी की तैयारी नहीं कर रहे। And the fourth thing, which is very similar to the first thing, is committing to the cause. Know your why you want to do MBA, make it strong enough, and then put all the faith on yourself कि हो जाएगा. Don't hunt for doubts like 2 year का gap है तो क्या करूँ, work ex नहीं है तो क्या करूँ, reservation नहीं है तो क्या करूँ. Remember, everything will be sorted out once you get good mark. Then we can figure those things out. But if you don't get good marks, you're not going to the interview table, right? So I want to talk about the whole plan, but it will be a very monotonous video. So I made this Excel sheet
जो आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम प्योरली कि आपको कौन से अरिथमेटिक में कब कौन-कौन से टॉपिक करने हैं, जैसे कि फर्स्ट मंथ जून में आपको रेशियो पहले करना है, फिर आपको परसेंटेज करना है, फिर आपको एवरेज करना है, प्रॉफिट लॉस करना है। तो उस तरह से मैंने चार्ट आउट कर रखा है, व्हिच यू कैन रेफर टू ईज़िली। You can just go in the description, take a look at the Excel, get in touch with me via my group if you think there's any problem in this, if you're not able to access, or what exactly can be fixed in this. So remember, if you're just beginning right now, and there are two cases, one you're workex, one you're not workex. So if you are someone who has a workex, then आपको 2 से 3 घंटे रोज देने पड़ेंगे एंड वीकेंड्स में आपको ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे देने ही पड़ेंगे. देयर इज नो वे आउट बिकॉज honestly the CAT syllabus is a lot, and right now if you start, I'm assuming that you're not that good at maths because people who are good at maths have a head start. So if you're not that good at maths, then you have to put in a lot of hours and you have to manage. And if you're someone who's taking a gap, भाई 6 से 7 घंटे रोज लग जाओ because then you have a disadvantage that you don't have work mark and you have to compensate it via your CAT score. So remember, it is in your hands. The hours are in your hand. You'll have to sacrifice a lot, but that sacrifice comes with a reward that will reward you very much in the long term. So right now, I'm wearing this I am Korikon t-shirt, and I have earned it because I have put in the long hours. And I was fortunate enough, but to be lucky enough, you have to increase your surface area, right? So just get in as much deep as you can, right? Now, most of the information that I want to share with you is written in the sheet. I don't want to make it again monotonous for you just running it on the screen. But there are three things I want you to do daily without fail. First is the crack to daily targets. Please उसको करो क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा. आपको रोज अलग से रिवीजन नहीं करने होंगे. ठीक है. डू 30 क्वेश्चंस of each topic, 30 to 50 questions of each topic every day which you are reading. 4 सेट्स अ डे का टारगेट बना लो. अगर आप नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 2 सेट्स अ डे डेफिनेटली करो. एक सुडोकू करो, एक काकुरो करो, एक काकुराता करो, 2 आर्टिकल रीड करो. ट्रस्ट मी, एक सुडोकू, एक काकुरासा, क्रैक टू डेली टारगेट और रीडिंग, पाँचों चीज़ करने में 1 घंटा लगता है. बट व्हेन यू डू इट रेगुलरली एवरी डे, द कंपाउंडिंग इफेक्ट इज़ अ लॉट एंड दैट इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट यू आर बेटिंग ऑन. ठीक है? सो इफ यू हैव मोर डाउट्स, प्लीज़ रीच out to me on Telegram. I will cover section-wise things in upcoming videos. And if you want to inquire about my course, feel free to drop a text on Telegram. And I am sure you will do all good in CAT. Thank you so much for being on the channel. I'll see you in the next video. All the best for your preparation, guys. Bye bye.